nobody who has done +2 in science, physics, chemistry, maths can even put a fuse, can rectify fuse in a electrical box. अगर फ्यूज उड़ जाता है तो कितने बच्चे अपने घर का फ्यूज लगा सकते हैं? बहुत कम लगा। या आपकी अगर स्कूटर खराब हो गया तो क्या स्कूटर में आइडेंटिफाई कर सकते हो कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है? कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोग स्क्रू ड्राइवर को घर में रखते हैं और हैंडल करते हैं? तो हमने बच्चों को, आप पॉलिटेक्निक से हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हैं, कितना हैंडवर्क कराते हैं और कितना कर And since I have written a book on IIT Kharagpur, historical development, and subsequently done a lot of work, but I'll come. And what shaped and how IITs are relevant to technical education, which impact you today. The reason is that IIT system got adopted by and large, in bits and pieces by the government. The first attempt to establish a MIT system, MIT type of institution, which was set up in 1884 in the US. And everybody talks about MIT being the Makkah and Medina of technology and science. So we had the Nobel laureate, Sir C.V. Raman, but a lot of people were in sciences exposed to the world. So after the World War II, the government of India of the day, that is British government, knew that they won't be able to stay long in India. Independence movement, decline in economy of Britain, and its empire. After World War II, it was evident that they have very few years left to stay on. So they started what they called, and secondly, a lot of Indian soldiers had sacrificed their lives during the World War II on the borders in Germany. And a couple of them came from Amritsar. I've met 2-3 families of those who died, who lived their life during the World War II. Even Haryana people a lot of people have died. So then they said that they would come with what? Post-war development. They launched a massive schemes, education, road infrastructure, industries, and many others. So they formed the post-war development program, and it was ably led by who is called Sir John Sargent. He was a graduate of Cambridge University and was working as advisor to education advisor to British. So because of the contact of Bhatnagar and many others, all these people were in touch, and many of these stalwarts had been to Britain. So they picked him up as the advisor, and he came as educational advisor to Government of India. And then they said that they would like to have MIT type of institutions in India. By the time, there were only 20-odd colleges of engineering in India, and most focused on civil engineering. So the IIT system began with Hill's report. They said that you have 4 types of institutes on the pattern of MIT in India, and they should be located in the areas where there are industries, concentrated pockets of industry. And then they said that this institute must work with industry. So they picked up Calcutta the first. They said first Calcutta, then Western, and then Southern, and then Northern.
So that was the order of sequence that they should establish the institutes. So then the committee was formed under Anna Sarkar. They were politicians, educationists of Bengal, Calcutta based, very eminent person in public life. He had been mayor of Calcutta and played a lot of positive role in developing education and healthcare in that Calcutta. That's VC Roy. They were all together. VC Roy was a very, very important politician, an eminent doctor, Bharat Ratna, and so on and so forth. So they then formed a committee under his chairmanship, and they suggested 4 institutes of the pattern of government. They should be eastern, western, northern, and southern. They did not identify a place for where they should be located, but they said that 2 parameters should be there: one, concentration of industry close to industries. Second, there should be water in the neighborhood, so that civil engineers can conduct hydraulic related experiments, which looks solid today. You don't need a water body to conduct hydraulic experiment anymore. You can do it in a smaller tank also. So that was it. So they formed. They were looking for the land. They wanted to. The British were interested in establishing first institute before 1947, so that they could give some local or whatever had left, they would try to leave some good. So some of the actions we took near the institute. So after independence, they all started paying. Was the chief minister, he was getting restive. A lot of people said, go to Bihar, there is a lot of land. Finally, the land was sorted out and Kharagpur came. And it started construction and in a small building. This is I mentioned. It was essentially, and even names were conceived that he came and he suggested he came and he recommended 4 institutions, and he also recommended All India Medical Center. Now, this is the report. And what he said was that Indian science is very good, but technology is not good. So this prepared in 1945 isometric map, that is broad architectural map of the institute. In fact, I had the copy, I've lost it. They got the catalog of MIT, president's report, investment in building, layout drawing of the institute, and suggestion for setting up MIT Institute. Then the NR Sarkari committee came, and the crucial people who contributed was one Dharamvir ICS, who later became cabinet secretary and secretary to the prime minister. He played a very important role both as a member of the NR Sarkar committee report and also in the government. Bhatnagar and J.C. Ghosh. And then S.R. Sengupta, he was also very, very eminent technical expert and professor at the Bengal Engineering College. Other members were mentioned, Bhatnagar, etc. Sengupta was another giant. And this, they said, ensuring adequate supply of manpower, institutions possibly on the lines of MIT, several institutions on regional basis. Then they said, what should be the consider? So they submitted this report. They said that should be recommended not less than 4. They said Kanpur, Calcutta, Bombay and Hooghly. The south ka unhone nahi bataya. So first east and west came in. Now the length of the should be 4 years. Minimum standard should be intermediate or higher secondary. Admission should be purely on merit. There should be no provincial quota. Some reservation, they said, should be education backward classes. Standard of education should not be lower than first class institution abroad, BS technical of University of Manchester or BS of MIT. Undergraduate and postgraduate should be 2:1.
It is interesting. The estimated capital cost of the institute was 3 crore 68 lakhs. आज के दिन एक मकान भी आप एक कैनाल कोठी में बना जाए जो 1.5-2 करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो उस समय 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए के करीब, और पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर वाज ट्रेनिंग वगैरह 18 से 20 रुपए उस समय कॉस्ट थी, और कंपेयर टू सिमिलर institutions 4,000 rupees. Then AICT was constituted in 1945. In fact, the Sarkar committee got converted into AICT, which not many people know. उन्होंने फिर इसको एंडोर्स किया और 4 इंस्टीट्यूट उन्होंने कहा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बनाए जाएं, और एक कॉलेज बाद में IIT दिल्ली जो है ये पहला कन्वर्ट है। पहले यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट आना, एक कॉलेज आना था चंडीगढ़ में, पैक तो था ही, उसके बाद एक और आना था, लेकिन यहाँ पे जो को लगाया गया था, ही वॉज वेरी क्लोज टू मिसेस गांधी, तो उन्होंने वो कहा भाई एक दिल्ली में भी IIT खोल दो, तो ये वहाँ चला गया और उसको IIT दिल्ली बना दिया गया। तो IIT दिल्ली वॉज नॉट द फर्स्ट one of the 4 that was recommended. It came as a convert. Halaki many people don't like the word convert, but I call it convert because I still see that IIT Kanpur, Kharagpur, Bombay have a different culture than Delhi. So search for faculty started in 47. कई नोबेल लॉरियट्स ने कहा हम भी काम करना चाहते हैं, खासतौर से ज्यूज जो जर्मनी से भगाए जा रहे थे, और बहुत नोबेल लॉरियट्स थे उधर, ब्रिटेन में भी थे। तो एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे देश, एक डीप लॉन्ग भी थे, बहुत बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट थे, और फ्रांस के थे, डच के, लेकिन जर्मनी में काम। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, काम करना। बहुत ऐसे थे लोग जो आना चाहते, लेकिन हमारे भी लोग थे भाई, हमारे जो साइंटिस्ट थे ये जो, उन्होंने मना कर दिया, बोले हम अपना तरह से पढ़ेंगे, हम अपनी तरह से। I think that was one monumental mistake that we made, and these people eventually landed up in US. All German Jews, they all ended up in the US, and they made huge contribution there. Richard Feynman is a Jew. His people had migrated to the US. तो एक कंट्री फिर 47 में मैंने जैसे कहा 47 में ऐड किया यूपीएससी ने कि भाई हमें some Nobel laureates were interested. तो फॉरेन एक्सपर्ट्स अंडर द कोलंबो प्लान कुछ आए, लेकिन वो उस टाइप के नहीं आए जो आने चाहिए थे। तो इंस्टीट्यूट शुरू हो गया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। इट हैड नो अथॉरिटी टू अवार्ड डिग्रीज एज इट हैपेंस। एक कलकत्ता के पास मैंने जैसे आपसे कहा, फिर हिजली पर आ गया। हिजली वाज ए जो पिकअप किया गया, हिजली लैंड, वहां पर सबसे ज्यादा खूंखार फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता, और वो जंगल में था, और एक इतने बड़े में करीब 100 आदमी को रखते थे, इससे डबल होगा, और उसको कोई मिल नहीं सकता था क्योंकि इट वाज इन्फेस्टेड बाय ऑल काइंड ऑफ snakes and many other things. It was a very badly infested area. बीमारियां बहुत होती। So this came as an executive order. This was a building in Calcutta where IIT Kharagpur started. It was earlier named as Eastern Institute of Technology, Eastern Higher Institute of Higher Technology, Higher Technical Institution. And now मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट, अब इसको डिग्री देने का काम आ गया। डिग्री देने का काम आया तो मौलाना आजाद प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा जी क्या करें, डिग्री तो दे नहीं सकते, या तो हमें, तो इन्होंने कहा जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करो। वो डायरेक्टर साहब भी बड़े तेज थे, जेसी घोष, वेरी वेल नोन फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, के वो चले गए कलकत्ता। उन्होंने कहा आप हमारे साथ कर दीजिए। तो बड़ी मुश्किल से फिर इसको बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर किया गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। तब एक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट को लाया गया सो दैट दे कुड गिव डिग्री।
फिर मौलाना आजाद का एक बहुत अच्छा है फैक्ट, द इंस्टीट्यूशन ओपनड अप इन thousands of new scheme which aimed at that there should be 4 higher technical institutions in the country to impart industrial training, newly eastern, western and southern. This is southern, therefore it should, then naming, it should be named as Indian Institute of Technology. ये मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे घोष जो थे IIT के डायरेक्टर थे, वो उनको पता था कि वो डायरेक्टर बनेंगे, उन्होंने 10,000 सैलरी की घोषणा की थी कि हम देंगे, यूएस को लिखा, तो काफी लोग उसमें आना चाहते थे। जैसे मैंने एक विजय लक्ष्मी पंडित भी गई, जवाहरलाल नेहरू जी भी गए और यूएस में उन्होंने MIT को देखा। और फिर एक आदर्शी दलाल थे जो कि टाटा के एडवाइजर थे, बहुत अच्छे एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी को बनाया था बॉम्बे में। और फिर इसका लोगो का बात में आया कि लोगो क्या हुआ जाए, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर घोष ने कहा योगा कर्मशु कौशलम, और उस पे मौलाना आजाद का ये है बड़ा इंग्लिश, हिंदी में लिखा, इंग्लिश में, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मोर ए प्लेस ऑफ एक्शन देन नॉलेज प्रैक्टिस एंड इन व्यू ऑफ दिस टू इज दैट इज योगा कर्मेशु कौशल, यानी कि योग करने से, काम करने से कौशल बढ़ता है। अब सवाल यह कि इसका क्या कैरेक्टर हो इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने कहा कि फिर उन्होंने डिग्री देनी शुरू की और 193 बच्चों को एडमिट किया गया, और उसके बाद इन IITs का एक्सपेंशन होता चला गया। 23 इंस्टीट्यूट हैं और एक ही एक्ट से ये चलते हैं, एक ही तरह का पैटर्न है और एक ही तरह का एडमिशन सिस्टम है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी ओपन है, कोई अच्छा, अगर आदमी में कोई अच्छा प्रोफेसर मिलता है तो उसको बिना एडवर्टाइजमेंट भी रख लेते हैं। उसकी वजह से दे आर एबल टू पिक अप गुड faculty, and they usually pick up at the level of assistant professors, very rarely as professors. Unlike in the universities, you can pick up professors directly, but in IITs they usually pick up assistant professors. That has been the pattern in most of the universities in the US. So अभी 23 IITs हैं. It is the largest chain in the world, managed and governed by one act of parliament. अब जो है जैसे मैंने कहा 4 से था यूनिफॉर्म। एक सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म पैटर्न होने की वजह से दे डेवलप्ड गेट एंड नॉट जस्ट आल्सो। तो ये मैंने आपको बता दी। दिस इज द पिक्चर ऑफ IIT खड़गपुर वेयर आई स्टडीड। दिस इज द लॉन्गेस्ट, इट हैज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे काफी रेलवे वर्कशॉप्स वगैरह भी हैं। And this was the time when I was there. And this is the picture of IIT Kharagpur, and I leave it here. I just want to request you only 2 things. Please emphasize on handwork. हाथ से काम करना, लैब में और वर्कशॉप में आप एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल या जो भी आप करवाते हैं वो करवाएं। अदरवाइज आप जो है अपने जॉब से जॉब को पूरा बेहतर देखिए। अगर वो हाथ से काम नहीं करेगा वो अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता, और उस पे आपको भी अगर करना पड़े तो करें। हम तो खड़गपुर में देखते थे, वो कहते आपको नहीं आता, मैं समझाता हूँ। वहां के खड़ा हो जाता था प्रोफेसर हो चाहे लेक्चरर हो, बोलो क्या नहीं आता, मैं करता हूँ। कानपुर में भी यही हाल कि भाई हम करेंगे। और दूसरी बात यह है, आपसे एक और मेरा प्रार्थना, क्लास कल्चर ना बनाइए। अगर आप सीनियर हैं, जूनियर हैं, आप भी लैब में जाइए। बहुत प्रोफेसर लैब में नहीं जाते, कहते हैं अब असिस्टेंट प्रोफेसर का काम। मैं DGM का वाइस चांसलर था, मैंने कहा आप क्यों नहीं जाते, बोले जी वो असिस्टेंट प्रोफेसर का काम। तो क्लास कल्चर में ना रहे। जिस दिन प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट लैब में जाएगा, वर्कशॉप में जाएगा, तो लैब इंप्रूव हो जाएगी, वरना नहीं होगा। और एक्सपेरिमेंट
के माध्यम से लोगों के वो इक्विपमेंट भी टूटेंगे, खराब भी होंगे। वो टूटने के लिए बनाए गए और खराब होने के लिए बनाए गए ताकि बच्चे सीखें। तो अगर आपको उसको दिखाना है कि एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, वो कैसे दिखाएंगे? आप किसी बच्चे से पूछो भाई न्यूटन का तीसरा फार्मूला है, तीसरा लॉ है, एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप कैसे दिखाओगे? हर रोज करते हैं। आज इसको फंडामेंटल को कैसे जोड़ोगे? न्यूटन के लॉस नहीं आएंगे, आप इंजीनियरिंग नहीं सीख पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप इंजीनियर, आपको थर्मोडायनेमिक्स का लॉ दिखाना है। आपके घर में क्या होता है? सबसे बड़ी लेबोरेटरी आपकी किचन है। वहां पे प्रेशर कुकर क्या चीज है? किस लॉ का किस लॉ का इसमें फार्मूला लगता है बताइए? थर्मोडायनेमिक्स के लॉ का फार्मूला लगता है। मैंने कई प्रोफेसर, कई टीचर से पूछा किसका फार्मूला लगता है, या प्रेशर कुकर का क्या क्या फिजिक्स है? बिजली में फ्यूज क्यों वो व्हाइट व्हाइट पाउडर क्यों जमा हो जाता है? तो ये सब चीजें जब तक आप पढ़ेंगे नहीं साइंस को, टेक्नोलॉजी को, जिंदगी में क्या हो रहा है, तो आप बहुत अच्छा जागरूक इंसान भी नहीं बना पाओगे। मैंने तो ऐसे भी इंजीनियर देखे जो स्क्रू ड्राइवर से अपना फ्यूज रिपेयर कर सकते। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या हुआ, वो सिविल इंजीनियर क्या हुआ, वो गारा नहीं बना सकता। तुम्हारे समय में तो भाई हाथ से काम करना है, तभी तुम्हें डिग्री मिलेगी। तो आई वुड ओनली रिक्वेस्ट दैट मेक गुड इंजीनियर, good technician out of the person. So that is all I would say, and I am very happy that I could find time to discuss and express my opinion, and any question I'd be happy to take. मेरी क्लास फेलो थी जिनसे मैंने शादी की, तो इनको भरोसा नहीं था मैं आईएएस में फिजिक्स और मैथ्स की वजह से आ सकता हूँ, और मैंने फिजिक्स और मैथ्स ही लिया है। और मेरे साथ थे डीपी बराव, उन्होंने भी उसमें फिजिक्स मैथ ज्यादा नहीं लिया, मैंने लिया। तो आज मैं भी आईआईटी का शुक्र करता हूँ, उसकी वजह से मैं आईएएस में आता हूँ। यूनिवर्सिटी होता तो मैं नहीं आ सकता।